I'm confident, but I'm confident internally. And I'm a very audience person. I'm a very commercial person. ये भी नहीं दिखाना चाह रहे कि आप इसे पसंद करिए या ना करिए. That was the marketing agency thought process for me to come in my character. This is very different, of course. Khaki में तो hand hold किया गया था मुझे. I was very new, and there were all these big stars. He is a completely director's actor, but बोलते तो है कि एक्टिंग में क्या है, but नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं, you know, and But beginning में तो of course अमित जी थे, अक्षय थे, Ajay was there, Aishwarya was there, Atul Kulkarni was there. I was the junior most actor. My character also was junior most. मेरी कुछ कॉमेडी फिल्में काफ़ी चली हैं तो लोगों को लगता है कि I enjoy that more. Golmaal was quite challenging initially because the first part was very difficult. Hi, this is Seerat Kapoor and you're watching me on First India Filmy. Hi, this is Tushar here and you're watching me on First India Filmy. तुषार सर, सीरत, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया फिल्मी पर. कैसे हैं आप सब? आप दोनों कैसे हैं? Well, हम लोग अच्छे हैं. What do you say about that? बहुत ही अच्छे हैं, इनफैक्ट बहुत ही एक्साइटेड है. इनफैक्ट बहुत अच्छे आप दोनों साथ में भी लग रहे हैं. तुषार सर से मेरा सवाल पहले यही रहेगा कि जब भी मैंने इनको देखा है हमेशा प्यार से, हमेशा पोलाइटली, हमेशा ग्राउंडेड, हमेशा सभी से अच्छे से बात करना. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ लाइक दैट सर? आई मीन बहुत सारे स्टार्स जो रहते हैं उन्हें बहुत मतलब वो रहता है कि दैट आई एम अ स्टार. यू आर नॉट लाइक अ स्टार, यू आर जस्ट लाइक अ कॉमन मैन, राइट? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ लाइक दैट? I don't really do anything to keep myself like that. I think that's my nature. I'm not very flashy person, and I'm confident, but I'm confident internally. So I don't feel the need to show my confidence externally. So maybe because I'm a very secure person, और मुझे इन external trappings की ज़रूरत नहीं महसूस होती to feel good about myself. Of course, I have my good days and my bad days, but I'm happy the way I am, and I hope I stay this way. We all hope you do, Tushar. Thank you. He's really kind, yeah. या सो फिल्म की बात करते हैं. मारिच फिल्म आ रही है आपकी. काफ़ी अच्छा ट्रेलर है, मैंने देखा. एक अलग जॉनर है, एक मस्त जो ट्रेलर निकल कर रहा है हमने देखा. किस तरीके के रिस्पांस आप लोगों को मिल रहे हैं? आई एम श्योर बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलते होंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये ट्रेलर है, मैं एज अ पर्सन, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पर्सन मैंने बहुत लाइक किया जब मैंने ट्रेलर को देखा. बहुत ही पसंद आया मुझे ट्रेलर. किस तरीके के रिस्पांस आप दोनों को मिल रहे हैं? विल स्टार्ट विद तुषार सर फर्स्ट. जैसे कि आपने अभी कहा, जब ऑब्वियसली हमारे मीडिया फ्रेंड्स और हमारे इंडस्ट्री फ्रेंड्स या हमारे पर्सनल फ्रेंड्स मैसेज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है. लेकिन जब आपने अभी कहा कि एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस पर्सन आपको ट्रेलर अच्छा लग रहा है, तब हमें बहुत खुशी होती है. मुझे खासकर ऐसा लगता है कि जेन्युइन ओपिनियन है ट्रेलर का. जो ट्रेलर मतलब इतने लाइक्स आए हैं ट्रेलर को, इतने व्यूज़ आए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के प्यार की वजह से आ रहे हैं. सो आई फील मोर रीअश्योर्ड व्हेन पीपल लाइक यू टेल मी मोर जेन्युइन अनबायस्डली. दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई वी मेक गुड ट्रेलर्स. Yeah. सीरत, व्हाट अबाउट यू? Well, बहुत अच्छा लगता है only when you're being honest, like Tushar said, you know. Sometimes maybe as actors we tend to sense the energy, around. But जो भी आज तक, online मैंने खुद देखा है, I think बहुत ही ऑर्गेनिकली लोग अपनी तरीके से इस फिल्म को पहचान रहे हैं. एक अलग ही सोच है इस फिल्म को लेके, तो वो ही एक बहुत ही पॉजिटिव साइन बन जाती है फॉर अस, बिकॉज so much time, energy, effort, passion, all of this goes only to entertain our audiences, and some of us of course want to do it in the most organic way. So when a film like this comes out and we have that kind of a reaction, it's validation. वो इतने महीनों की मेहनत जो है वो आजकल स्माइल्स में देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है. या करेक्ट. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप कोई फिल्म साइन करें, इवन आई एम एज अ नॉर्मल ऑडियंस, मैं कोई भी चीज़ करता हूँ बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही सोच विचार कर करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा. आप कोई भी फिल्म साइन करने से पहले या कुछ भी प्रोजेक्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए? आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं? आई एम अ वेरी audience person. I'm a very commercial person in the sense, not because of the money aspect of it, but because of the entertainment aspect of it.
तो मैं ऑफ बीट फिल्म भी देखूँ, कमर्शियल फिल्म भी देखूँ, कोई भी जॉनर की फिल्म देखूँ, मुझे मनोरंजन ज़रूरी होता है जब मैं फिल्म देखने जाता हूँ। अगर वो 2.5 घंटे की हो या 3 घंटे की हो या 1.5 या 2 घंटे की हो, द फिल्म शुड नॉट फील लॉन्ग, द फिल्म शुड फील एंगेजिंग, द फिल्म शुड, अगर सस्पेंस थ्रिलर है तो आपको अपनी सीट्स तक ग्लूड रखनी चाहिए फिल्म के सस्पेंस को। और आपको ये जानने पर, मतलब आपकी ये जानने की उत्सुकता बरकरार रहनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, कौन है किलर, कौन सा ट्विस्ट आने वाला है अभी। दैट इज़ द मंत्रा दैट आई गो टू सी अ फिल्म विद एंड आई साइन अ फिल्म फॉर। या सीरत, आपने इस फिल्म में, इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या देखा जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसकी वजह से आपने ये फिल्म साइन की? तो पहली बात, नरेशन के टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि हर एक कैरेक्टर बहुत ही बारीकियां से और सेंसिटिविटी से लिखी गई है। तो yes, of course, everyone has understood that we're talking about grey sides, but grey can also mean different things to different people. तो हम ये भी नहीं दिखाना चाह रहे कि आप इसे पसंद करिए या ना करिए. It's completely upon the audience to decide that, and make that opinion. But at the same time, हर फिल्म में हर एक कैरेक्टर इतना इतनी डेप्थ और इतनी लेयर्स के साथ शायद कम ही दिखने को मिलता है. तो आई थिंक व्हेन दैट केम इन फ्रंट ऑफ मी इट मेंट a lot, because I felt like not just one angle but the whole universe feel very authentic. तो मैंने actually first as an audience or as a viewer almost excitement में, oh this is sounding very nice, and that's how it came across. उसके बाद जब of course I understood the character, it was no different. It was written with so much intensity at the same time, even though it looks all easy. एक ठहराव जो होती है परफॉर्मेंस में, आप इस टॉप मॉडल में भी आप शायद वो पहचान पाएंगे. इस तरीका का जोन है, इस तरीके का जोन है. तुषार सर, आपसे जानना चाहेंगे, जूहू पीवीआर में जब भी इसका ट्रेलर लॉन्च था मारिच का, हम भी वहीं पर थे. आपने एक शानदार सी एंट्री मारी थी पुलिस की जीप में. जी, क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे कि पुलिस की जीप में जाना है? कुछ उस बारे में बताइए. That was the marketing agency thought process for me to come in my character. Though I was not dressed in character, but I came in my character to create that little impact. And we've been doing a lot of intrigue campaigns. Yes. So we've been doing a lot of intrigue campaigns around the characters, around this hat man. So वो भी उसी का एक पहलू है. और in fact मैंने लखनऊ में भी जब ट्रेलर लॉन्च किया तो I came on a bike to PVR, not PVR, I think Inox or something. Yeah. I came to a bike, and इंदौर में I came on an open jeep. सो यहाँ पुलिस जीप में आया, फिर मैं ओपन जीप में आया, और एक जगह मैं बाइक पे आया, मोटर बाइक पे. सो कूडोज टू द मार्केटिंग टीम एंड द आइडियाज़. आई थिंक इन्हीं आइडियाज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे 2 साल से. कोविड में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे फिल्म की प्रमोशन में, सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे थे. तो आई थिंक क्यों ना ये सब चीज़ें किया जाए. या आपने पहले भी पुलिस वाले का किरदार निभाया है, इंस्पेक्टर का किरदार पहले भी आपने निभाया खाकी में. इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? कुछ कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाने? दिस इज़ वेरी डिफरेंट. ऑफ कोर्स खाकी में तो हैंड होल्ड किया गया था मुझे. आई वाज वेरी न्यू एंड देयर वर ऑल दीज बिग स्टार्स. सो आई फेल्ट लाइक एलिस इन वंडरलैंड 1-2 दिन के लिए. देन आई वाज कॉन्फिडेंट. बट बिगिनिंग में तो ऑफ कोर्स अमित जी थे, अक्षय थे, अजय वाज देयर, ऐश्वर्या वाज देयर, अतुल कुलकर्णी वाज देयर. आई वाज द जूनियर मोस्ट एक्टर. माय कैरेक्टर आल्सो वाज जूनियर मोस्ट. So I was very well cast and very suited to that He character. did very well, yeah. Thank you, but all credit to the director, because I did whatever he said. Yeah. Here I have had to look after myself. Also he has done what the director What the director has said. He is a completely director's actor. But I guess in this character, it was more challenging in different ways. I think there it was because I was playing a cop for the first time and I was very new in my career. Here, challenging. I've seen Tushar's performances and I can clearly say that in this character it's very real. I hope so. And this is again outside my comfort zone. So I've not played this kind of a rough and tough, very greyish character of a seasoned cop who's like this. He's got his good side, but a badass quality also. मैंने देखी है तो when I saw him perform live in front of me and in this tone, जो इनका कहने का तरीका होता है, या there's no right or wrong way of doing it, but this style of a cop really is honest, but at the same time
ये जो हम बात ही कर रहे थे, you know, about the actions or the you know, the message that he puts across, the heroism comes from there, you know. So yeah, rightly said, the marketing has used, you know, that Very because perfectly, yeah. जी because वो some फिल्में you बहुत know, real है. okay, you know, somewhere I read that कि आप full time एक dance choreographer थी. Then how did you thought that कि you have to become an actor? Well, I never thought I would be an actor. I knew at the time I wanted to dance and sing, and then I got introduced through a commercial, I remember, and it is the unknown or the mystery of filmmaking that really appalled to me. And because I trained as a dancer and as a singer, you know, I understood कि बोलते तो है कि acting में क्या है, but नहीं, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं, you know, and this is in fact an amalgamation of everything put together. So because I hadn't trained in only acting and I had done, you know, training in dance and music, that's when I met my Dadaji and I said, Dadu, I want to train, you know, and he was like, go for it. That's how it was. But तुषार सर, आपने आपसे जानना चाहेंगे, आपने कॉमेडी भी की है, राइट? आपने सीरियस एक्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कॉमेडी की है, राइट? आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि एक कॉमेडी किरदार से एक सीरियस किरदार पर यू नो स्विच करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, या फिर आप जैसे कलाकार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता होगा, आई एम श्योर. नहीं, ऑल डिपेंड्स आप अपने काम को, अपने परफॉर्मेंस को कैसे अप्रोच करते हैं. इवन कॉमेडी हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस. अगर आप हर कैरेक्टर को सिंसियरली सीरियसली पेश करने की, नॉट पोर्ट्रे अ सीरियस कैरेक्टर बट सीरियसली करने की कोशिश करेंगे, सो इट विल बी चैलेंजिंग. अगर आप सुपरफिशियली करेंगे कॉमिक कैरेक्टर्स को भी, तो वो सुपरफिशियल लगेगा. देयर हैज टू बी सम डेप्थ इन एवरी कैरेक्टर. देयर हैज टू बी, इवन द एनर्जी हैज टू कम फ्रॉम विद इन. इट कांट बी जस्ट एक्सटर्नल, इट कांट बी सुपरफ्लुअस. तो बनावटीपन, मेरा मतलब है कि हर चीज़ को अगर आप थोड़ा मतलब बिलीवेबल, रियल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें चैलेंजेस आएंगी, वेदर इट्स सीरियस और इट्स कॉमिक. इनफैक्ट आई एन्जॉय प्लेइंग सीरियस कैरेक्टर्स मोर. मुझे सीरियस कैरेक्टर में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि थोड़ा चैलेंज होता है, थोड़ा इंटेंस होता है. तो यू हैव टू रियली गो इन टू योर ग्रे शेड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर डार्क साइड ऑल्सो. वाइल कॉमेडी हैज़ इट्स ओन डिफरेंट चैलेंजेस, बट क्योंकि मेरी कुछ कॉमेडी फिल्में काफ़ी चली हैं तो लोगों को लगता है कि आई एन्जॉय दैट मोर. आई इनफैक्ट एन्जॉय वॉचिंग सीरियस मूवीज़ मोर, आई एन्जॉय प्लेइंग सीरियस कैरेक्टर्स मोर. बट या व्हाट द ऑडियंस, हमारी जनता जनार्दन जिस भेस में, जिस अवतार में आपको पसंद करती है, वो आई थिंक वो उनकी राय है और उनकी राय सर आँखों पर. यू नो, कैरेक्टर तो बहुत सारे सभी लोग करते हैं, सीरियस कैरेक्टर, कॉमेडी कैरेक्टर, लेकिन जिस तरीके से कॉमेडी आप करते हैं मुझे नहीं लगता कोई और करता है या कर सकता है. बहुत ही अच्छे से आप करते हैं. यू नो, कॉमेडी करना कितना मुश्किल होता है सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि यू आर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कॉमेडियन दैट वी हैव. Thank you so much. I don't know if I'm one of the finest, and there are so many good comic actors. And Golmaal was quite challenging initially because the first part was very difficult to get the character right, and then we were all doing it for the first time. So I didn't know whether the way I was portraying it, जिस अंदाज में मैं कर रहा था, with sounds and expressions and body language, क्या लोगों को पसंद आएगा, loud लगेगा, क्या उनको theatrical लगेगा, या फिर उनको लगेगा कि नहीं, this is something new, because I was not using sign language. I was doing it like a mute character who can hear, so he makes sounds, you know. So that was challenging, and sometimes it works out in the film line. Sometimes people don't appreciate your work as much as you would like them to. One has to just keep trying, one has to just keep your fingers crossed, and there's no harm in experimenting. yeah. And it's boring to keep doing the same thing again and again, but I always respect what the audience likes me in, and I will continue to do those kind of comedies no matter what. Sirat, tell us something about your experience working in Maritz with Tushar sir. Well, it was a very, एक तो opportunity ऐसी आई कि मतलब it happened like that, you know. I was called in for a narration, and as soon as I heard the story, I knew I had fallen to just the right place with the right team. तो हमारी जो filming process रही है थोड़ी अलग रही है because it was such a big cast. I've had a few days of shoot with Tushar, of course, with Naseer sir, and you know, many other actors. But I think the preparation of Reena takes the cake away from me because
उनकी तरह सोचना था, बहुत सी चीज़ें अलग करनी करनी पड़ी because of who the character is and the mindset that she has. So just to kind of break and unbreak your own thought process to mold yourself into another. कल को मैं ऐसे उठ जाऊँ और मैं सोचूं कि मैं आप जैसे सोचती हूँ, आप मुझे आपके जैसे एक्ट करना है, so it takes a lot to understand the psychology, the mind behind the person, and then there on the possibilities. तो ये सारे discussions हुए थे. We had workshops, we kept experimenting with different styles of reaction, and then of course the most realistic one is the team that I'm working with, so that is the one that they really liked. But it did put me into a whole new space. I think this is by far a character which has allowed me to extremely be free and find a different side to myself through portraying her. So I've learned a lot playing the character as well. I've थैंक्स अ learned लॉट from it. टॉकिंग टू अस. बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को मारिच के बारे में? क्या कैसी होने वाली है फिल्म, और कुछ कहना चाहेंगे? Well, honestly, मैं fans तो खैर पहली फिल्म है हिंदी में, but having said that, it would be amazing to get to know more of you, and I hope that everyone enjoys the work that we've done on the film, because essentially हम सब उसी वजह से मिले हैं. हमारा मेन पर्पस वही था कि हम अपने दर्शकों को एक अच्छा एंटरटेनिंग फिल्म दिखाए, जिसके बाद अगर वो निकले भी तो वो निराश ना हो. उनको पसंद आई नहीं पसंद आई वो उन पे है, बट we've done our best to kind of just let them feel like the value that has gone behind the ticket is तुषार सर, going to आप be कुछ worth बोलना it. चाहेंगे ऑडियंस को? नहीं, आई जस्ट लाइक टू टेल देम दैट मारीच का मतलब है मुखौटा जो अपनी असली चेहरे में ना हो, जिसका असली चेहरा छुपा हुआ हो, वो मारीच है. और इस मर्डर मिस्ट्री के साथ ये टाइटल इसलिए फिट बैठता है क्योंकि खूनी का जो असली चेहरा है वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका जो मास्क है अभी तक उतरा नहीं है. सो ही इज़ द रियल मारीच. एंड अगर आपको इस मारीच का राज जानना है, सारी असलियत का खुलासा 9 दिसंबर को होगा सिनेमा घरों में. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू बोथ. Thank you. थैंक यू सो मच.